Okay, good afternoon. Today we are discussing on the fourth chapter, that is last part. हम लोग ने फोर्थ चैप्टर का लास्ट पार्ट करना शुरू किया था, if I'm not wrong. फोर्थ चैप्टर का हम लोग लास्ट पार्ट कर रहे थे, पब्लिक रेवेन्यू का. कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन अपना बाकी था, बराबर ना. फोर्थ चैप्टर का अपना कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन बाकी था, और मैंने आपको बताया था हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन करेंगे. तो आज हम लोग कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन कर रहे हैं. कैनॉन्स का मतलब क्या है? वेज, WAYS, वे, वे ऑफ टैक्स. टैक्स कितने प्रकार के होने चाहिए, उसका वे क्या होना चाहिए. तो पहले मैं आपको कहता हूं इजीएस्ट वे होना चाहिए, एनीबडी कैन अफोर्ड, और वो ज्यादा पिंच नहीं लगना चाहिए. कुछ लोग बोलेंगे सर टैक्स मत लगाओ, सब फ्री में दो, तो भी चलेगा. अभी अब श्रीलंका की हालत देख रहे हो, क्या हालत है श्रीलंका की. अब सबको श्रीलंका की आज की हालत पता है. यानी गवर्नमेंट को टैक्स तो मारना ही पड़ेगा. टैक्स ना मारे हुए गवर्नमेंट का काम तो हो नहीं सकता, इसीलिए गवर्नमेंट को टैक्स मारना जरूरी है. अब उसके वेज क्या होंगे? तो पहला वे है ट्रेडिशनल वे. टैक्सेशन इज डायरेक्टली इम्पोज ऑन द पीपल and it is directly contributed to the government. ये डायरेक्ट व्यू है. दूसरा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू. मॉडर्न व्यू क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. यानी जो अमीर है उसके ऊपर टैक्स मारो और वो पैसा गरीब पे खर्च करो. टैक्स आर फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. आप टैक्स किस लिए दे रहे हो? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. Third, taxation are used to divert the allocation of resources from less priority, unproductive to productive. अभी समझो फूड एंड मोबाइल, ऐसे दो तरीके हैं. समझो, पकड़ो 2 मिनट, अज्यूम करो फूड एंड मोबाइल. अभी आप बोलोगे सर मोबाइल भी बेसिक गुड्स आपके हिसाब से, पर वैसे देखा जाए तो सबसे बेसिक गुड्स कौन सा है? फूड. तो अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम रिसोर्सेस आर ट्रांसफर इन द फील्ड ऑफ मोबाइल, तो वो फूड में होना चाहिए रिसोर्सेस, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मोबाइल सेक्टर पे ज्यादा टैक्स मारेगी, जिसके वजह से क्या होगा? मोबाइल सेक्टर में आने वाले रिसोर्सेस कम हो जाएंगे. फूड सेक्टर पे टैक्स रिलैक्सेशन देगी, टैक्स हॉलीडे करेगी. इसके हिसाब से क्या होगा? फूड सेक्टर में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे पैसे, और प्रायोरिटी किसको है? फूड को. मैंने आपको पहले ही कहा था देयर आर 3 सेक्टर्स, 3 डिमांड्स. बेसिक, दैट इज कॉल्ड नेसेसरी. सेकंड कंफर्ट, एंड थर्ड लग्जरी. बेसिक में कैसा है, नेसेसरी में कैसा है, वो होना ही चाहिए. कंफर्ट में इट गिव्स यू कंफर्ट लाइक एयर कंडीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. And luxury, that is a symbol of status. BMW car, symbol of status. So there are ample of commodities which are symbol of status. तो टैक्स कहाँ ज्यादा मारना चाहिए? जहाँ सिंबल ऑफ स्टेटस है वह टैक्स मारो ना कौन बोल रहा है. पर जहां बेसिक गुड्स है उसके ऊपर टैक्स कम करना चाहिए. सो दिस आर वेज ऑफ टैक्सेशन. उसका पहला कैनॉन्स ऑफ इक्विटी. टैक्स क्या करता है? इक्विटी क्रिएट करता है. व्हाट इज इक्विटी? इक्वलनेस ऑफ इनकम इन ऑल द ग्रुप ऑफ पीपल. अभी आप मुझे पूछोगे सर इक्वलनेस ऑफ इनकम इन ऑल द ग्रुप ऑफ पीपल कैसे पॉसिबल है? तो मैंने आपको सिंपली कहा था इक्वलनेस ऑफ इनकम इन ऑल द ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब है जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है उन लोगों पे टैक्स मारो, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उन लोगों पे खर्चा करो. इज इट क्लियर? बहुत आसान है समझने के लिए. कैनॉन्स ऑफ इक्विटी का मतलब है जहां ज्यादा पैसा है उन लोगों पे टैक्स मारो, जहां पैसा नहीं है उन लोगों पे खर्चा करो. तो इट क्रिएट इक्विटी, equalness between haves
and has not. Secondly, canons of certainty. जो टैक्स इंप्लीमेंट करोगे वो सर्टन होना चाहिए कितना आपको टैक्स भरना है 10%, 12%, 5%, 6%, एक सर्टन अमाउंट होनी चाहिए. आप आपके मन का टैक्स नहीं दे सकते. यू कैन नॉट चार्ज अ टैक्स अकॉर्डिंग टू योर own wish and whims. The taxes are based on certainty principle. Means I know I have to pay 10%, I have to pay 12%, I have to pay 6%, I have to pay 30%. What maybe it is, what may be the amount charges on me, I am going to pay. So that amount should be certain. If amount is uncertain, how I come to know how much amount is to pay? And that's why canons of certainty is very important. Canons of economy, it should be economical. Economical means poor people can also afford it. Not only rich people, but poor people can also afford it. Even rich people also try to pay less tax. They need each and everything economical, under their control. And if the taxes are economical, which can be easily paid by rich people, which can be easily paid by poor people, means they will not think this is very expensive. It is economical. Anybody can afford it. It is affordable, in short. So the taxes which you are charging, it should be affordable. It can be afforded by common people. Canons of convenience, it must be convenient. What do you mean by convenient? The collection of taxes. When you collect the taxes, it should be convenient. Means conveniently any can pay the taxes. If the convenience is not there, suppose you are staying in Malad and you have to pay your tax in say Pune. So from traveling to Malad to Pune, it is not convenient for you. So there should be a collection center near Malad, or you must be affiliated with some banks, just like SBI or any nationalized bank. They will collect your tax on behalf of you. Or you can pay online tax also. Today, actually. But before 50 years back, 60 years back, online system was not there. So the payment must be convenient. Anybody can easily approach. The feeling of IT form, income tax form, it must be saral, simple. And that's why Government of India has introduced saral form. Saral means simple. Anybody can fill it. There is no need for CA or ICWA person to fill that form, or any specialized accountant to fill that form. Anybody can fill that form. Any learned person can fill the form. That should be like that. Means there is no need of specialization in that. So anybody can afford it. Anybody can do it. It is too easy. Canons of productivity. The taxes which you are collecting, it must be productive. Again, I will go to the example of Sri Lanka. What does Rajavardhani family has done? उनको जो भी बाहर से कर्जा मिला, वो उन्होंने खुद के लिए और इलेक्शन में यूज किया. और आज श्रीलंका की क्या हालत है, आप लोग न्यूज में सुनते होंगे, एबी पे देखते होंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप में चैटिंग होता होगा. ये क्यों हुआ? इसका मतलब है पैसा तो आपको मिला, आपने उसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज नहीं. In the same way, the taxes which you are collecting, it should be used for productive purpose. There is no need to use the tax for unproductive purpose. So the taxes must be used for productive purpose. Next, canons of elasticity. What do you mean by elasticity? It must be elastic, it must be changeable, not rigid, according to resources, according to state, according to the
condition of state. There are so many states which are developed states. I'm not saying country, I'm saying state. Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, like that. So there are so many states which are developed states. There are so many states which are underdeveloped states. There are so many states which are developing states. So according to scenario of the state, according to the situation of the state, you have to fix the taxes. That's why what happened. It should be elastic. It should not be equal for all. If you think Bihar is little bit underdeveloped than Gujarat or Maharashtra or Karnataka or Tamil Nadu, then what you have to do? Give some less tax burden on Bihar. Because the resources are not there, the poverty is high, the state is not properly developed. That's why we need urgency, urgent matter to control on the concept that tax must be based on elasticity. Canons of flexibility. Flexibility, elasticity, something equal, not same I'm saying, but something sounds equal. Means you can adjust the new condition. In the Corona period, take example of Corona. Last 2 years, we are facing the problem of Corona. In that period, the tax burden was less on the people because people are not engaged in productive activity. Maximum people are facing the problem. Those who are very lucky, they are getting fixed income, fixed salaries. But there are ample of people who lose their salaries, who lose their jobs. There are ample of unfortunate people. Unfortunately, they lose the job. They lose the salary. There was a salary reduction between 10 to 50%. In some area, 50 to 60% salary reduction was there. So first, my suppose income is 50,000 per month, for example. Now I'm getting 10,000 per month. So my income reduced by 40,000. So it indicated that I have to adjust myself. And earlier, when I was earning 50,000, I am paying tax according to that. Now I'm paying 10,000. So I will pay tax according to that. Is taxable or not, that is a debatable issue. But for clearance of the point, flexibility is like that. It should be flexible. Canons of simplicity. The tax system must be simple. Again, the same point repeated. Anybody can pay the tax. Anybody can fill that form. And it must be simply understood by the people. There is no legal dispute. You need not need any help of a legal people, of a legal person to fill the tax. You know, there should not be disputed issues. The issue is clear. Just like you are going in shop, giving the money and purchasing product. You are going to cinema hall, purchase ticket and enjoy cinema. It is so simple. In that way, tax system must be simple. There should not be any burden on the head of the taxpayer. Canons of diversity. Diversification. What do you mean by diversification? There are multiple tax systems that brings you more revenue. And what happened? Single tax cannot generate sufficient revenue. That's why you are introducing multiple tax systems. This tax, that tax. Means when you leave the home, you start to pay tax, toll tax, this tax, that tax, service tax,
X tax, Y tax. Now, so many products come under GST. That's why this multi-fold tax system vanished in India. Though GST is also giving you sufficient income, because GST is laid on the services goods which you purchased. When you purchase goods from shopkeeper, from mall, when you visit any restaurant and you enjoy your food, afterwards you are paying GST on your total bill. When you purchase any shirt, trouser from a reputed shop, when you purchase mobile from a reputed shop, you have to pay GST. In a modern day, after 2017, this scenario changed. But before that, what was the situation? The situation was there were multi-tax systems. So there are differentiate tax, different types of taxes. Canon of expediency, economical, political, social, all things related with tax. Economical situation, social situation, political situation, there are ample of situations which affect on your tax system. We cannot say a single system affects on your tax system. There are manifold things which affect on your entire tax system. Canons of coordination. There should be a proper coordination. When the different taxes are imposed, there should be a proper coordination. There should be a proper coordination between the taxpayer, government, different departments, and even taxes laid by central government, taxes laid by state government, taxes laid by local government. There should be a coordination between all the three bodies. Because in India, we have three-tier system. We have central government, we have state government, and we have local governing bodies, that is BMC. So when BMC put tax, when state government put tax as a state government, when central government put any excise duties, central duties, etc., there should be a proper coordination between all these groups. And I cleared. आपको समझा होगा. Then we jump on the 5th chapter. And the 5th chapter is nothing but, directly I'm jumping on 5th chapter because other part are not so important. In the case of your exam system due to Corona, maybe your online exam or objective type questions. So directly we'll jump on the 5th chapter, that is shifting of tax burden. Now there are two types of shifting: forward shifting and backward shifting. Suppose the tax laid on my shoulder, I am shifting it to customer, or I am shifting it to my productive activities, to my labor force. Means government laid tax on me. I am not a final sufferer. Final burden will be on customer or on workers. आप बोलोगे सर वर्कर्स पे मुझे टैक्स भरना पड़ा तो उतना वर्कर का मैं सैलरी काटूंगा या मेरा टैक्स उनके ऊपर शिफ्ट करूंगा. That is called backward shift. But none of the worker will be ready. It will affect on his productivity. His productiveness decreases. Am I right? As his productivity goes down, the problem will be faced by the producer.
Then there is a simple solution in front of producer. Shift tax on customer. So what he is doing? He is shifting full tax on customer. Sometimes he shift 50%. Sometimes he shift 20% and other tax burden bear by himself. Sometimes he shift entire 100% tax on the customer. He is not bearing any single penny. आप बोलोगे ऐसे कैसे सर? फॉरवर्ड बैकवर्ड को आपको समझा? फॉरवर्ड टैक्स सिस्टम क्या है, बैकवर्ड टैक्स सिस्टम क्या है? बैकवर्ड शिफ्टिंग का मतलब है प्रोड्यूसर, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं मेरे वर्कर्स पे टैक्स मारूंगा या मैं मेरे कस्टमर पे टैक्स मारूंगा. दैट इज फॉरवर्ड. बैकवर्ड तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट विल अफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी. तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग. तो फाइनल टैक्स बर्डन विल बी लेड ऑन द शोल्डर ऑफ कस्टमर. अभी उसमें डिफरेंट टाइप्स. अगर डिमांड कंप्लीटली इलास्टिक, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक. अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो मैं क्या करूंगा, कस्टमर की डिमांड को बढ़ने वाली तो है ना. परफेक्टली इलास्टिक मींस इन्फिनाइट. तो मैं पूरा का पूरा टैक्स कस्टमर को मार दूंगा. सो एज अ प्रोड्यूसर आई एम enjoying zero tax and entire burden I shift on customer. It is clear? If there is relatively elastic demand, means what happens? If I increase the price, my demand will be affected. That's why what happens? I am bearing maximum part and I am giving less part on the shoulder of customer. Are you getting my point? So it is depend upon the market scenario, market condition. In the perfectly elastic demand, entire tax burden on the shoulder of seller. In the perfectly inelastic demand, entire tax burden we will put on the shoulder of buyer. If the relatively elastic, seller share more part, small burden on buyer. Relatively inelastic, more on buyer and less on seller. Are you getting my point? फिर से बता रहा हूं. If demand is completely elastic, that is infinite, entire part, entire amount will be enjoyed by buyer or seller. Entire amount will be paid by seller because seller is confused. No? If I am selling my product and if I increase the price, the demand is elastic, changeable. Maybe there is a certain change in demand. So why should I take the chance? So I will not ask buyer to pay any extra money, that is tax money. The entire burden I will pay. I am a seller. In inelastic, I know मैंने कीमत कितनी भी बढ़ाई,
तो भी सेलर बायर वो लेने वाला ही है। सॉल्ट कितना भी महंगा हुआ तो लोग लेंगे, उनको ऑप्शन। तेल कितना भी महंगा हुआ उनको लेना ही पड़ेगा। अभी तेल को ऑप्शन है घी, नो डाउट, वनस्पति, पर वो फॉरेन एटीट्यूड के हिसाब से। अपने इंडिया में क्या है ना, जो चीज तेल में बनती है वो तेल में मिलती है, जो घी में बनती है वो घी में मिलती है। इसलिए इंडिया में तेल और घी वैसे प्रॉपर सब्स्टिट्यूट हम लोग नहीं कह सकते। तो इनइलास्टिक में क्या है मुझे मालूम है, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो कस्टमर को मेरे से ही कमोडिटीज लेनी पड़ेगी, राइट। तो व्हाट ही विल डू, seller, he will put entire tax burden on customer. Relatively elastic में maximum tax burden seller will bear and minimum tax burden buyer will bear. And relatively inelastic, maximum tax burden buyer will bear and less tax burden seller will bear. This is of demand side. When we see the supply side, that is demand side. Now go to supply side. In the perfectly elastic supply, entire incidence of tax is on the buyer. This is it. Perfectly inelastic supply, entire tax burden is on seller. Relatively elastic tax supply, greater burden on buyer. सप्लाई की बात करो, डिमांड की नहीं है। ग्रेटर बर्डन ऑन बायर एंड लेस बर्डन ऑन सेलर। रिलेटिवली इनइलास्टिक, मैं सप्लाई की बात कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, जो पहले बताया वो डिमांड से, अब बता रहा हूं सप्लाई से। लार्जर टैक्स बर्डन इज ऑन सेलर एंड स्मॉलर ऑन बायर। सप्लाई में पहले दो और डिमांड में पहले दो कॉमन है, सेकंड दो चेंज हो, इतना याद रखो। अब हम लोग 6th चैप्टर पे जाएंगे, दैट इज इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। इसमें 6th चैप्टर में इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन में आपको क्या करना है बता रहा हूं। एक तो इनकम एंड वेल्थ इफेक्ट आपको करना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन है, इफेक्ट ऑन रिडिस्ट्रीब्यूशन है, एंटी इन्फ्लेशनरी नेचर है ऑफ टैक्सेस। तो मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दूंगा इसकी, इतना डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। 7th चैप्टर में फिर से कह रहा हूं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टैक्स के इकोनॉमिक इफेक्ट इनकम और वेल्थ पे क्या होगा। Income and wealth is properly distributed, haves and has not. Those who are having more income, they will be taxed more. Those who are having more wealth, they will be taxed more. And that money is for the upliftment, development of the poor downtrodden classes. So those who are having more money, haves. And those who are having have-nots. So those who are having more money, have. What happened? Maximum money will be put on the shoulder. Maximum money or maximum tax burden will be put on the shoulder of rich people. Their sacrifice amount is more because they are rich. They are having ample of money. So what happened when they are having ample of money? Automatically, taxes reduced. Income inequality and wealth. Taxes are reducing income inequality and wealth. Higher the taxes, higher the income equality. Lower the taxes, lower the income equality. Now, effect on consumption. Income effect of taxation. When taxes are reduced, purchasing power
or real income of the taxpayer increases. Right? When taxes are reduced, I get more money in hand. Suppose मेरे पास 10,000 रुपया है और आपने मेरे पे 3,000 टैक्स मारा, तो मेरे हाथ में कितना बचेगा? 7,000. बराबर? तो मैं खरीदूंगा कितने से? 7,000 में से. इट इज ऑल्सो क्लियर. अगर आपने मेरे ऊपर 1,000 टैक्स मारा, तो मेरे हाथ में कितने बचेंगे? 9,000. तो शायद मैं ज्यादा पैसा खर्च करूंगा. इज इट क्लियर? So income effect of the taxation, tax reduce the purchasing power if the taxes are more. If the taxes are less, my purchasing power increases. Substitution effect. यहाँ क्या होता है? तो लैपटॉप एक समझो X से एक Y. मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता वरना आप बोलोगे सर कंपनी का प्रमोशन कर. दो लैपटॉप है X से Y. सब्स्टिट्यूट है ना मेरे लिए. मैं X भी लिख सकता हूँ, Y भी लिख सकता हूँ. अगर X पे टैक्स ज्यादा है तो I will go for Y. Y पे टैक्स ज्यादा है, I will go for X. इसका मतलब है मैं X पे जाऊं या Y पे जाऊं, it is depends on the tax which they are putting. If taxes are higher, I will prefer other product. Means instead of going on the X, I will go to Y. Yeah, instead of going on the Y, I will go to X. So I have two options, X and Y. When there is inflation, what happens if the tax increases? In the case of inflation, the purchasing power of the people decreases by increasing taxes. क्योंकि इन्फ्लेशन में आपकी परचेसिंग पावर को मुझे कम करना है, तभी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा. इन्फ्लेशन में मुझे आपकी परचेसिंग पावर को कम करना है. अगर इन्फ्लेशन में मुझे आपकी परचेसिंग पावर को कम करना है तो मैं क्या करूंगा? टैक्सेस इंक्रीज करूंगा. और डिप्रेशन में, रिसेशन में या इकोनॉमी स्लगिश ग्रोथ हो रही है तो मैं क्या करूंगा? टैक्स को कम करूंगा और आपके परचेसिंग पावर को बढ़ाऊंगा. मेरा काम क्या रहेगा? आपके परचेसिंग पावर को इफेक्ट करना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपकी परचेसिंग पावर बढ़ाना या आपकी परचेसिंग पावर को कम करना. सो इट इज डिपेंड्स ऑन दैट. Purchasing power depends upon the money which you are charging from me. And suppose if government put tax on that product become more costly. So automatically PP, purchasing power, decreases. A regular effect of tax consumption on consumption. Taxes may be used to regulate production, consumption. Consumption can be regulated by taxes. Production of commodity. For example, in the regular case, if you want to keep control on demand of cigarettes, alcohol, production of cigarette, production of liquor. So as a government, what we will do? We will put heavy tax burden on alcohol. We will put heavy tax burden on cigarettes, which reduce the productivity. On the other hand, consumption side, if you put heavy tax burden on liquor or something else, automatically what happens? Consumption decreases. So overall, we observe the tax effect either positively
और नेगेटिव। अगर मुझे कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो टैक्स कम करो। प्रोड्यूसर, अगर मुझे कपड़े का कंजम्पशन बढ़ाना है तो मैं कपड़े के ऊपर टैक्स कम करूंगा, तो परचेसर कपड़ा परचेस करेगा। ये सोशल बेनिफिशियल आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करती है। पर भाई नहीं, अल्कोहल है, सिगरेट है, उसकी प्रोडक्टिविटी को मुझे कंट्रोल में लाना है, रखना है, तो व्हाट आई विल डू, I will put heavy tax burden on such activities. Effect on saving and investment. When you are putting heavy tax, saving reduces. And as saving reduces, investment also reduces. So tax is doing two effects, positive as well as negative. Higher the tax, higher the sacrifice, lower the saving. If saving is lower, investment is lower. अगर आपको आपके देश का सेविंग बढ़ाना है तो चार्ज लेस टैक्स, बिकॉज हायर द सेविंग हायर विल बी द इन्वेस्टमेंट। ये मैथमेटिकल व्यू है। सोसाइटी में ऐसा ही होगा ऐसा कोई कह नहीं सकता। इट्स अ मैथमेटिकल व्यू, इट्स अ साइंटिफिक व्यू, because economics is a social science, as we say. Though it is not natural, but it is social science. It's a scientific view. ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही, ऐसा हम लोग दावे के साथ नहीं करें। Allocation of resources पे इफेक्ट, टैक्स का इफेक्ट allocation of resources पर। मुझे रिसोर्सेस को allocate करना है, I will put less tax. मुझे रिसोर्सेस को उस पर्टिकुलर एरिया में अलोकेट नहीं करना है, आई विल पुट मोर टैक्स। आप लोग नहीं समझा सर, ठीक है। जो वनवासी एरिया, आदिवासी एरिया, रिमोट प्लेसेस, वहां मुझे और रिसोर्सेस को शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं स्कीम निकालूंगा। जो भी कोई प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन यूनिट वहां शुरू करेगा, आदिवासी एरिया में, वनवासी एरिया में, रिमोट प्लेसेस में, तो आई विल गिव देम हेवी कंसेशन। देयर शुड बी 5 years tax holiday. There is no need to pay taxes, and as you are getting 5 years tax holiday, then what you will do? Simple answer. You will shift your resources in that place, and on other hand, that area got benefit. But I know there are large number of units are in Mumbai. There is no need of excess unit. So what I will do, in the city area, there is no need of such unit. I will put heavy taxes. So the allocator, the person who is allocating resource from one area to other area, he will stop a while. He will think over it. Why should I? Because if I open my company in Mumbai, I have to pay heavy taxes. Instead of that, if I open my company in remote places, I have to pay comparatively less taxes. So the less tax burden I am enjoying in that area, and higher tax burden I am enjoying in this area. Then why I have to do so? It is too simple, right? Then we will move on the seventh chapter. Sorry.
seventh chapter, that is public expenditure, canons, classification and effects. So we are moving on the seventh chapter. The total chapters that you know are 14, and we are moving on seventh chapter. The seventh chapter is public expenditure, canons, classification and effect. Now canons of public expenditure, हम लोग ने canons of taxation देखा, अभी हम लोग को देखना है canons of public expenditure. इसमें अपने को इफेक्ट करने की जरूरत नहीं, बराबर. Canons of economy. What do you mean by canons of economy? हम लोग public expenditure देख रहे हैं अभी. The government spend money on people. Canons of economy फिर से मुझे श्रीलंका की ओर आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि श्रीलंका ने एक्सेस एक्सपेंडिचर किया. आज श्रीलंका की हालत क्या है, आज पाकिस्तान की हालत क्या है. तो when you are doing more expenses on the people, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं. अगर ध्यान से देखो तो 17.5 समथिंग फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल है, 90 मिलियन 90 उनकी रिक्वायरमेंट ईयरली फॉरेन से प्रोडक्ट लेने के लिए. श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका अगर 90 बिलियन डॉलर्स उसको जरूरत है फॉरेन से कुछ लेने के लिए, और उनके पास 17.5 18 बिलियन डॉलर समझो, तो एक साल के लिए 18 बिलियन डॉलर कैसे उनको पूरा होगा. जिनकी 90 की रिक्वायरमेंट है, 18 में वो क्या करेंगे, 20 भी नहीं. तो पूरे साल, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, कुछ प्रोड्यूस करते हैं. मैं एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूं, तो उनको अपने इकोनॉमी पे खर्चा कम करना चाहिए. जो गवर्नमेंट खर्च करती है पब्लिक, ये फ्री में दो, वो फ्री में दो, ये फ्री में दो, वह कम करना चाहिए. उन्होंने नहीं किया, एंड देयर दे आर एट प्रेजेंट. अगर हमको कोई भी एक्सपेंडिचर करना है तो इट शुड बी इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल मतलब मैंने आपको बताया, कॉमन पीपल कैन अफोर्ड इट. गवर्नमेंट, यहाँ मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो पीपल है ना गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट कैन अफोर्ड इट. वरना कभी क्या होता है ना, हम लोगों को नाक से मोती ज्यादा, नाक से मोती ज्यादा नहीं होना चाहिए. नाक हल्का और मोती ज्यादा है ना, तो नाक खींचे नीचे लेके आए. हम लोग मराठी में कहावत कहते हैं, नाकापेक्षा मोती चढ़. नाक से मोती बड़ा नहीं होना चाहिए, कान से कान की बाली बड़ी नहीं होनी चाहिए. अगर मैंने 10 किलो की कान की बाली डाली मेरे कान में, पूरा कान नीचे आएगा. इसका मतलब है गवर्नमेंट उतना ही एक्सपेंड करे जितना जरूरत है. इज इट क्लियर? कैनॉन्स ऑफ सरप्लस, आपको हमेशा सरप्लस बजट रखना चाहिए, आपको डेफिसिट बजट को अवॉइड करना. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज सरप्लस बजट एंड व्हाट इज डेफिसिट बजट? सरप्लस बजट मींस your revenue is more and expenditure is less, whereas deficit budget means your expenditure is more and revenue is less. So what you have to do, you have to avoid deficit budget and you have to introduce surplus budget. Canons of sanctions. आपको वेस्टेज रोकने के लिए सैंक्शन करना चाहिए. मतलब क्या, कितना पैसा कहाँ यूज होगा. एजुकेशन में बाबा मेरे इकोनॉमी का 5% इससे यूज होगा, डिफेंस में 10% होगा,
तो वेस्टेज नहीं होगा। आप बोले नहीं सकते, मेरी भूख 2 पूरी और 2 गुलाब जामुन की, और बुफे में एम्पल ऑफ डिशेस होती है। मैंने 4 पूरी ली, 2 फुल्का लिया, 2 गुलाब जामुन लिया, जलेबी है वो एक स्वीट डिश ली, बासुंदी है वो ली एक कटोरी में वाटकी में, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं उतना ही खा सकूंगा ना जितना मेरा पेट है। अगर मेरे पेट में 2 गुलाब जामुन और 2 पूरी जाने के बाद मेरा पेट भर जाएगा, तो मैं वो डिश उठाऊंगा और वैसे डस्टबिन में डालूंगा। तो वैसे ही हुआ ना फूड का, गलत बात है। तो उसी तरह से मुझे मालूम है ना मेरी भूख कितनी है, आई हैव साइड इट, मुझे मालूम है, मुझे इतना लगता है तो उतना ही मैं लूंगा, तो अवॉइड वेस्टेज होता है। उसी तरह से जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है ना, तो गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए मुझे एजुकेशन में कितना करना है, मतलब मुझे डिफेंस में कितना करना है, मुझे जुडिशियरी पे कितना करना है। एक बार ये गवर्नमेंट को फुल एंड फाइनल पता चला, तो जो गवर्नमेंट का वेस्टेज हो रहा है वो नहीं होगा। Is it clear? So it will stop the wastage. Next point आपका आ रहा है canons of elasticity. Public canons of benefits. Public expenditure ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्रिएट करे, सोशल वेलफेयर क्रिएट करे। It should create maximum social advantage. लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, गरीब को जस्टिस मिलना चाहिए। किताबी बातें पर अपने कहनी पड़ेगी, गरीब को जस्टिस मिलना चाहिए, कम्युनिटी को बेनिफिट मिलना चाहिए। इस तरह से गवर्नमेंट ऐसा स्प्रेड करे। कैनॉन्स ऑफ इलास्टिसिटी, जब आप पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हो तो इट शुड बी इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है अगर मुझे लगता है कि बाबा अभी एजुकेशन में इतने पैसे की जरूरत नहीं, डिफेंस में जरूरत है, तो मुझे डाइवर्ट करना है। मैं बोलता हूँ एजुकेशन के लिए 5% रखा है, डिफेंस के लिए 10% रखा है, तो फिक्स सैंक्शन किया। पर अभी पता चला मैंने 5% तो रखा था एजुकेशन के लिए ओवरऑल मेरे नेशनल इनकम का हिस्सा, पर अभी एजुकेशन को 5% की जरूरत नहीं है, 4% में काम चल रहा है, 4%। तो बचा हुआ 1% क्या करूं, बहुत कहाँ जरूरत है डिफेंस में, तो वहां डाल दो। इस तरीके से मैं इकोनॉमी को एडजस्ट कर सकता हूं। कैनॉन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, आप जो एक्सपेंडिचर करोगे वो प्रोडक्टिव पर्पस पे करना, अनप्रोडक्टिव पर्पस पे। अब ये बोलोगे सर प्रोडक्टिव पर्पस अनप्रोडक्टिव पर्पस क्या? सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये अनप्रोडक्टिव पर्पस इकोनॉमिक्स में आता है। डिफेंस पे ज्यादा पैसा खर्च करना, ये अनप्रोडक्टिव पर्पस, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर जिसको लोग कहते हैं। उससे अच्छा ब्रिजेस, मेट्रोज, मोनोज ये बनाना प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स यू शुड स्पेंड मनी ऑन प्रोडक्टिव एंड नॉट ऑन अनप्रोडक्टिव, ऐसा होता है। You should pay the money on productive and not on unproductive, ऐसा होता क्या है। Canons of neutrality, they should be neutral. Means what? Public expenditure promote production may be cause of damage of environment or result violation of human rights. The government has to take politics like taxation, appreciate laws, etc., etc., etc. सिंपल बात है, इससे नुकसान नहीं होना चाहिए ह्यूमन राइट्स का, इन्वायरमेंट का। आप प्रोडक्टिविटी में जाओगे, पर कभी कभी क्या होता है एक्सेस प्रोडक्शन से ना इन्वायरमेंट का नुकसान होता है, तो आपको इन्वायरमेंट को भी प्रिजर्व करना, आपको इन्वायरमेंट के नुकसान को भी कम करना। तो इट शुड बी लाइक दैट। कैनॉन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन,
अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, खर्च कर रहे हो आप यानी गवर्नमेंट, तो इट शुड बी रिड्यूस द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। तो आपको रिच पे कम खर्चा करना पड़ेगा और गरीब पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा था, गरीब पे पैसा ज्यादा खर्च करना है नहीं क्या, गरीब पे पैसा ज्यादा खर्च करना है नहीं क्या, मैंने आपको कहा था। मिड डे मील, दोपहर का भोजन योजना बहुत से स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, या जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते में चावल देना, उनको सस्ते में अनाज देना। अगर आप उनको गेहूं चावल ये सब सस्ते में दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली गरीब का फायदा होगा। तो गवर्नमेंट ऐसी जगह पैसा स्पेंड करे जहां गरीब का फायदा होगा। इज इट क्लियर? मेरे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर में आपको सिर्फ इतना ही देखना है, बाद में इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर देखने की जरूरत नहीं। क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटीज स्पेंड द मनी ऑन डिफेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा are subdivided into sub parts. जैसे agricultural expenditure may be subdivided into irrigation, research, increasing the yield of soil, HYP seeds. अब एग्रीकल्चर में पैसा खर्च कर रहे हो तो उसका बाइफरकेशन दो। बाबा एग्रीकल्चर में 100 करोड़ खर्च कर रहा हूं मैं यानी गवर्नमेंट, तो 1 करोड़ यील्ड के लिए, 1 करोड़ का बाबा सॉइल का टेस्टिंग के लिए, 1 करोड़ में खर्चा कर रहा हूँ इरिगेशन के लिए, 1 करोड़ खर्चा कर रहा हूँ HYP सीड्स के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। डिपार्टमेंटल क्लासिफिकेशन, यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, जुडिशियरी, गवर्नमेंट हाउसेस, सिविल दैट इज पुलिस. So these all are the departments, and government is spending the money on different departments. That is known as departmental expenditure. Transfer and non-transfer expenditure. Transfer expenditure means pension. When you got retired, you are getting pension. So that pension money, that transfer income is not creating any productive sense. अगर मैं 60 साल का रिटायर होगा, 60 साल के बाद मुझे पेंशन मिलेगा, मेरे मरते तब तक 50%, 30% जो भी कुछ मिलेगा उसके हिसाब से मेरे फैमिली को मिलेगा। पर ये ट्रांसफर एक्सपेंडिचर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे सब्सिडीज देता हूं मैं, या हेल्थ पे पैसा खर्च करता हूं, ये सब ट्रांसफर इनकम है, विच इज नॉट क्रिएटिंग एनी पॉजिटिव इफेक्ट। और अगर हम लोग बात करें नॉन ट्रांसफर की, तो वो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करता है, जैसे क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट्स, क्रिएटिंग प्रोडक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Grants and purchase price. Dalton says that grants are those expenses made by public authority, for it may not receive direct to system. जैसे सब्सिडीज है, ओल्ड एज पेंशन है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको ग्रांट की जरूरत होती है। एंड गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को पेमेंट करना है, वेजेस देना है, इसको गवर्नमेंट को ग्रांट की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ग्रांट लेके पैसा खर्च करता है। तो यहां
अपना 7th चैप्टर जो मेन है वो कंप्लीट कर। जो मैंने 7 में बताया उतना ही आपको करना। 8 के लिए हम लोग गुरुवार को देखेंगे, गुरुवार को 8, 9, 10 करेंगे। 8, 9, 10, 11 तो 13, 14, 12, 13, 14 3 चैप्टर बचेंगे। तो मेरे ख्याल से शनिवार या सोमवार तक अपना पोर्शन पूरा हो जाए। सोमवार मंगलवार यानी नेक्स्ट ट्यूसडे तक, शायद नहीं, नेक्स्ट ट्यूसडे तक अपना पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा शायद। ओके बाय।